Hello everyone, welcome back to the channel. So today's topic lies at the intersection of immunology, aging biology and longevity science. So we are going to discuss about immunosenescence and longevity biology. It's a very interesting topic, so please do watch till the last slide. Also, please do like, comment, share and subscribe to my channel. So let's get started and understand this topic in a detailed manner. See, with increasing life expectancy worldwide, we are seeing, life expectancy increasing among the individuals day by day. So to understand why the immune system weakens with age and how this affects the health span of an individual, the lifespan of an individual, has become one of the most important challenges in modern biology and medicine, to be very frank about it, because everybody wants to live more and more. Everybody wants to delay the aging process. Everybody wants to delay the senescent phase of their life. Everybody wants to increase their lifespan by an extent, so that they can live a healthier life, for a longer time span. So aging, as we all know, is a progressive time dependent thing. Okay? It increases day by day, it increases year by year. It's a progressive thing, it's a time dependent thing, and it's decline in a physiological integrity, right? Like टाइम डिपेंडेंट डिक्लाइन है ये एक तरीके से देखा जाए तो, बिकॉज फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी के बेसिस पे हम अगर बात करें तो इट्स अ टाइम डिपेंडेंट डिक्लाइन, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वो जो इंटीग्रिटी एक इंडिविजुअल की होती है वो जो वीक होती जाती है इनटू एन इंडिविजुअल. So it leads to impaired function, it leads to increased vulnerability to diseases, to chronic conditions as well. So among all body systems, immune system एक ऐसा system है. Body के अंदर बहुत सारे system होते हैं. There is digestive system, respiratory system, excretory system. There are different kinds. But जो immune system है, it is one of the most sensitive system in the human body, and it is one of the earliest and most profound age related declines. अगर हम देखें कि जब भी थोड़ा भी एज जब ज़्यादा हो जाता है एक इंडिविजुअल का, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है सबसे पहले इम्पैक्ट दिखाता है, rather than the other systems present in the body. So this decline does not simply increase the infections or infection rate. It does not do that. It reshapes the inflammation process. It reshapes the risk of chronic condition to an individual. It reshapes the responses to a vaccine by an individual and chronic disease burden as well. Okay? So this age associated immune dysfunction is known as immunosenescence. उसी को हम immunosenescence बोलते हैं. Immuno is immune system and senescence is जहाँ पर it's not like it is going to decline or it is going to show the higher infection rate in an individual. It's not like that, but it's going to reshape the entire process. Maybe it will delay the immune response. It will not be that immediate, तो वो सब चीज़ों में कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है. And it plays a central role in determining how long and how well we live as an individual. Okay. Now, what is immunosenescence? Immunosenescence होता क्या है? See, it's a gradual deterioration of immune competence with advancing age. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इम्यून सिस्टम का जो कॉम्पिटेंस है, जो उसकी पोटेंशियल है टू डील और टू फाइट विद सर्टेन इन्फेक्शंस इन द बॉडी, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता जाता है. Now it includes reduced ability to recognize new pathogens. उसका नए पैथोजेंस को या नए इन्फेक्शियस एजेंट्स को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है. इम्पेयर्ड इम्यून सेल सिग्नलिंग, इम्यून सेल का जो सिग्नल मैकेनिज्म होता है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है. मेमोरी रिस्पॉन्स वीक हो जाता है अगर पैथोजेनिक एनकाउंटर है, एंड इफ इट हैज़ ऑलरेडी इनकाउंटर्ड इन द प्रीवियस टाइम, तो वो कहीं ना कहीं डिले होता है टू शो द रिस्पॉन्स, एज आई सेड. And susceptibility बढ़ जाती है to infections, to chronic conditions such as cancer and inflammatory diseases as well. ठीक है? Now, importantly, immunosenescence
इज नॉट यूनिफॉर्म इम्यून सप्रेशन, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भाई कंप्लीटली इस एज को रीच करने के बाद ये कंप्लीट सिस्टम रीशेप, नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स रादर एन इम्बैलेंस, राइट। एक इम्बैलेंस है, एक प्रोसेस हो रहा है, दूसरा थोड़ा डिले हो रहा है। वो जो कम्युनिकेशन जो होता था, जो कैस्केड इमीडिएटली जो बनता था, वो चीज़ में कहीं ना कहीं डिले होता है। एंड यू नो sometimes the some part of immune system becomes overactive as well, so it is an imbalance, ज़्यादा कम का एक imbalance है। Now what are the whole hallmarks of aging? See, immunosenescence is driven by the core hallmarks of the aging. पहला है जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से इम्यून सेल्स के अंदर डीएनए डैमेज होता है, सो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। सेकेंड इज टीलोमियर alteration, which limits the immune cell replication. So I don't know if you know this or not, but telomere plays a very important role in longevity of an individual, ठीक है। telomere is the end sequence of the DNA, so and very short sequence of the DNA as well. so telomeres जो होते हैं इनका ये जो है इम्यून सेल के रेप्लिकेशन को इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली। आई विल एक्सप्लेन हाउ। प्रोटियोस्टैसिस का प्रोसेस जो होता है वो लॉस होना बॉडी से या डिस्टर्ब करता है वो कहीं ना कहीं इम्यून सिग्नलिंग प्रोटीन्स को। एंड सेल्यूलर सेनेसेंस, सेल्स का डाई होना, जितना बन रहे हैं उतने ज़्यादा डाई हो रहे हैं, तो इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डिसफंक्शनल इम्यून एंड स्ट्रोमल सेल्स इन द बॉडी। So इस वजह से together these processes reduce the immune adaptability and increases the inflammatory signaling into the body. Now I'll give you a brief about immune system. Immune system is a broad branch जहाँ पर हम various type of immune reactions को समझते हैं under two very famous type of immune system, which are innate immunity and adaptive immunity. innate immunity होती है जो फटाफट response देती है। first of all innate immunity birth से होती है individual के पास, बहुत rapidly response देती है and it is non-specific in nature, मतलब specific pathogen को target नहीं करती, वो general characteristics के basis पे act करती है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, so they have their function, they have their steps to go into the process, no matter कि सामने किस तरीके का पैथोजन है। एडेप्टिव इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज स्पेसिफिक, इट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो इंसान आफ्टर बर्थ एक्वायर करता है, एंड इट इज मीडिएटेड मेनली बाय टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एजिंग जो है दोनों ही आर्म्स को अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। इट इम्पेयर्स इम्यून सर्वेलांस प्रोसेस, इम्यून सर्वेलांस पैथोजेंस के अगेंस्ट, ट्यूमर्स के अगेंस्ट, सेनेसेंट सेल्स के अगेंस्ट। सर्वेलांस इज द कैपेसिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू वॉच कि कोई फॉरेन इन्वेडर आ रहा है, बॉडी में एनकाउंटर कर रहा है, हाउ टू किल, टू एक्टिवेट, व्हाट टू एक्टिवेट, व्हेन टू एक्टिवेट, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं स्लो हो जाती हैं। Then comes innate immunity and aging. How innate immunity is related to aging? See, aging के साथ macrophages show reduced phagocytosis and antigen representation. जो मैक्रोफाजेस होते हैं, मैक्रोफाजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, ठीक है, टू द टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो मैक्रोफाजेस उसको कम कर देते हैं। मैक्रोफाजेस आर वेरी फेमसली नोन फॉर फैगोसाइटोसिस, जहाँ पर वो सेल को दे रप्चर द सेल एंड दे किल देम ऑफ, दे इनगल्फ देम ऑफ, ठीक है, उसके थ्रू वो उसे किल करते हैं, तो वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं इधर से उधर, एक कम्युनिकेटर का रोल प्ले करते हैं, तो वो कम हो जाता है। एंड नेचुरल किलर सेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं नंबर में, एंड दे लूज देयर साइटोटॉक्सिक एफिशिएंसी। उनकी जो किल करने की, डायरेक्ट किल करने की एबिलिटी है सेल्स को या पैथोजन को, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सो दिस लीड्स टू इनइफेक्टिव अर्ली इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट्स, which is a hallmark of aging. Now, moving forward to adaptive immunity and aging. Adaptive immunity goes under dramatic remodeling with age, ठीक है।
फर्स्ट इज सबसे पहले प्रोडक्शन जो है नाइव टी सेल्स का, नाइव टी सेल्स, नाइव यानी कि इमेच्योर, सो इमेच्योर टी सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है बॉडी के अंदर, इन रिस्पॉन्स टू न्यू पैथोजेंस। मेमोरी टी सेल्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, लेकिन वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, वो उतने अच्छे से मेमोरी रिटेन नहीं कर पाते। बी सेल की जो डाइवर्सिटी है वो भी डिक्लाइन होती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी इम्पैक्ट होती है। So this explains why older adults respond poorly to vaccines and are more susceptible to emerging vaccine infections, right? So because see, B cell का जो function है, B cell produces, B lymphocytes produces antibodies. Now antibodies are very specific to each antigen, ठीक है? They are part of adaptive immunity. They are very specific to each and every antigen that encounters in the body. So every antigen has a different antibody to interact with. So वो अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं वो specificity भी impact होती है. Now thymic evolution, thymic involution. Thymic involution जो thymus होता है, which is responsible for T cell maturation, जो T cells जहाँ से बनते हैं वो thymus से बनते हैं, वहाँ से T cells maturation होते हैं. It begins shrinking after puberty. Puberty जब एक person hit करता है उसके बाद वो उसका thymus जो है वो shrink होने लगता है, जिसे हम thymic involution बोलते हैं. उस process को हम thymic involution बोलते हैं. सो बाय ओल्ड एज थाइमिक टिश्यू जो होता है वो इज लार्जली रिप्लेस्ड बाय फैट, वो वहाँ पूरे खत्म हो जाते हैं और वहाँ पे फैट आ जाता है. So it severely limits the generation of new T cells and narrows down the immune diversity. ठीक है. Then inflammaging. See, inflammaging क्या होता है? It refers to a persistent low grade inflammatory state जो कि aging individuals में देखा जाता है. मतलब इम्यून सिस्टम तो है, रिएक्ट तो करेगा, बट इन अ वेरी लो ग्रेड इन्फ्लामेटरी स्टेटस, बहुत ही इन्फ्लामेशन बहुत ही कम कॉज करेगा बिकॉज ऑफ ऑल दी अबव फैक्टर्स आई मेंशन्ड अबव. सो क्यों ऐसे होता है और हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है? सो एलिवेटेड लेवल्स देखे जाते हैं इंटरल्यूकिन्स के, इंटरल्यूकिन 6 हुआ, TNF अल्फा हुआ, देन देयर इज CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन. तो ये इनके वजह से अगर ये देखा जाता है, इनके एलिवेटेड लेवल्स देखे जाते हैं, तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी स्टेटस जो है वो कम हो गया है. इन्फ्लामेजिंग इज ड्रिवन बाय सेनेसेंट सेल्स. जब बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेनेसेंट फेज में, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्फंक्शनल हो जाता है, गट डिसबायोसिस हो जाता है, गट ब्रेन एक्सिस जो होती है वो ढंग से काम नहीं करती, लाइफ लॉन्ग एंटीजन एक्सपोजर अगर होता है तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं. इट अंडरलाइज मैनी एज रिलेटेड डिजीजेज इज वेल. ठीक है. Then comes the immunosenescence and disease का part. So see, immunosenescence contributes to, अभी देखो, because immune system is not working properly in an individual, so वो infection के लिए बहुत ही ज़्यादा susceptible है, vulnerable है. Severe infections बहुत fast उसको किसी भी उस पर्सन को हो सकते हैं, XYZ पर्सन को इन्फ्लुएंजा हुआ, कोविड हुआ, कैंसर इंसिडेंस बढ़ जाता है ऐसे इंडिविजुअल का ड्यू टू impaired immune surveillance. ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से, एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस का खतरा भी बढ़ जाता है न्यूरो इन्फ्लामेशन की वजह से. सो इम्यून एजिंग अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम इन द बॉडी. ठीक है. नाउ the next topic which is longevity biology. longevity biology में हम समझते हैं कि ऐसे कौन से mechanisms हैं जिसकी वजह से organism की life को लंबा किया जा सकता है, healthy किया जा सकता है, वो study को हम longevity biology बोलते हैं. Now lifespan refers to total years lived of an individual. health span मतलब होता है कि कितने साल वो disease free रहा person. That is health span, and lifespan is total lived years. Now immune health is a major determinant of both. ठीक है, we all know it's a basic thing. Now next is genes and longevity. See, there are some pathways that are involved in longevity. ठीक है, जैसे FOXO transcription factors हैं, FOXO genes बोल सकते हो या FOXO transcription factors बोल सकते हो, they are involved in transcription. So ये क्या करते हैं, स्ट्रेस रेजिस्टेंस को एनहांस करते हैं.
स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है बॉडी, उसको वो एनहांस करते हैं। अभी फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अगर ज़्यादा दिया जाए इंडिविजुअल को बाहर से, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड से, तो आप सोचो कि उसका स्ट्रेस रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उससे स्ट्रेस जल्दी से नहीं होगा। देन देयर इज सिरट्यूइंस। सिरट्यूइंस जो है वो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, डीएनए रिपेयर रेगुलेट करता है, इन्फ्लामेशन रेगुलेट करता है। देन देयर इज एमटीओ सिग्नलिंग पाथवे जो कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को लिंक करता है टू ग्रोथ एंड एजिंग। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ हाउ वी हैव आइडेंटिफाइड व्हाट आर द जीन्स दैट आर related to longevity, what are the genes that are related to aging process. Now we can alter, we can artificially provide. Now I am not talking in terms of this is happening, I am talking in terms of this can happen. ठीक है, तो I'm just telling you to that's how you link कि अभी हमें जीन्स पता है एंड हमें गोल पता है. नाउ वी कैन लिंक, वी कैन do something with these genes to delay the process, aging process. So ये जो pathways हैं ये directly influence करते हैं immune aging को. Now कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन की हम बात करते हैं. सी कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन विदाउट माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉन्जिविटी इंटरवेंशंस नोन. You know, if you want to increase your lifespan, health span, you just have to avoid eating so much of calories. I don't mean having 2-time balanced meals or 3-time, 4-time balanced meals is not good. It is good definitely, you know, each to their own, but very high calories, like literally very high calories without malnutrition. अगर malnutrition है then it's a different case altogether, but अगर नहीं है तो it is one of the most powerful method which can increase the lifespan. It activates the autophagy, it reduces inflammation in the body, it preserves the immune function of one individual, and it delays immunosenescence. ठीक है, caloric restriction we have talked about. Lifestyle and longevity. सी लाइफस्टाइल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है इम्यून एजिंग को. मैंने आपको अभी बताया, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका इम्यून सर्विलांस प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होते जा रहा है. तो रेगुलर एक्सरसाइज इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरीवन शुड डू. एडिक्वेट स्लीप होना चाहिए, you know, of certain number of hours वो होना चाहिए. Now each to their own again. So it supports immune regeneration, because when we sleep, our body and our brain and every part of our body goes into the repair system. So adequate sleep is must. And stress reduction, it lowers the inflammatory burden. So again, it improves the longevity thing. So that is how lifestyle is directly related to this. Now targeting immunosenescence. Immunosenescence को टारगेट करने के लिए there are emerging interventions which includes जैसे high dose and adjuvanted vaccines, you know, senolytics to eliminate senescent cells, thymic regeneration strategies, how we can regenerate the thymus into an individual, and how we can prevent, you know, it from deterioration. इम्यून सेल की रिप्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है और हाउ वी कैन डिले द प्रोसेस. सो दैट इज द एम टू रिस्टोर यूथफुल इम्यून फंक्शन इन एन इंडिविजुअल. ठीक है, नाउ इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं. सी फ्यूचर ऑफ लॉन्जिविटी बायोलॉजी लाइज इन पर्सनलाइज्ड इम्यून प्रोफाइलिंग, बिकॉज विदाउट दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस. अगर personalized immune profiling, because each individual is different, each individual's immune system is completely different, it functions in a complete different manner, it responds in a complete different manner. And by manner, I'm not saying the methods are different, the methods are same, but the extent is different, the response time is different, the memory time is different, everything is different. ठीक है, तो personalized immune profiling, gene therapies, integrated anti-aging strategies, ये सबको कहीं ना कहीं क्लब करके immune rejuvenation process को boost किया जा सकता है rather than disease treatment alone. ठीक है, so to wrap up, immunosenescence, or in conclusion, immunosenescence is a central driver of aging and age-related diseases.
Preserving immune function is essential not just for longer life but for a longer and healthier life in an individual. Okay, so yeah, that was about it. If you enjoyed this video, please do like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want any other topic, which you want me to cover next, please do let me know below in the comment section. We will meet in the next video. Bye bye, take care.